Today we will be breaking down the concepts in the Hooke's law. Hooke's law is one of the topics in the effects of forces, where an object like a spring is extended by the means of some force. And how we can assume this picture, we can have a spring tied at one end and the other end is free to move. So if you attach a small mass with the spring and exert some force to push the mass little away from this tied point, then the spring will extend. So we will observe a change in length in the spring. That is one of the consequence of the forces. So we will find how much is the increase in length, that is called the extension, and that extension will be directly proportional to the force itself that we have applied to extend. This is the Hooke's law. We will break down the concepts of limits of proportionality, elastic limit, plastic limit, and also a breaking point. What happens that when we are extending a spring, so we reach some maximum value of force. After that value, the extension and force will not be directly proportional, and then a little more increasing the force, we may reach the elastic limit. At that limit, when we remove the force, the spring will retain its original length when it will stop. But when the disturbance stops in the spring, but exceeding the elastic limit, there comes a plastic limit. And till that limit, when we leave the spring, or when we leave, sorry, the force that we applied on the spring will not retain its original length that earlier it had. What will happen if the other end is tied with the fixed support? The on and one end there is some small mass is attached, and where some small mass is attached, we can disturb that end. So what to do is to disturb the other end where some mass is attached. ये आप एक्शन करेंगे कि आप ये डिस्टर्बेंस करेंगे, ये क्या है, ये एक एक्शन है ना, दिस इज एन एक्शन। और हमने ये भी कहा था कि फोर्स क्या होती है, एक एक्शन ही होती है, करेक्ट। तो ये आपने या किसी भी ऑब्जर्वर ने, किसी स्टूडेंट ने ये वाला एक्शन करना है, उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसके अगेंस्ट कुछ ऑब्जर्वेशन ही कैन मेक। सो ऑब्जर्वेशंस जो मिलेंगी ये एक्शन परफॉर्म करने से, वो ज़रूर ये होगा कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो उसमें चेंज आएगा, क्योंकि या तो आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो स्प्रिंग या तो एक्सटेंड होगा या क्या होगा, कंप्रेस होगा। सो आइदर it'll extend or it should get compressed. So the original length or the length must or will change. The observation, the length of spring will change. And it depends on what, कितनी length change होगी, right? ये depend करता है आपका action कितना strong है, depends on how strongly we disturb the end of the spring at which some mass was attached. So depending, length of spring will change depending on the magnitude of disturbance. Magnitude of disturbance जो है वो एक्शन है, और मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स ही होगी, तो कितनी फोर्स होगी उस लिहाज से ही उसकी लेंथ चेंज होगी। तो ये स्टेटमेंट, इवन हुक्स लॉ की स्टेटमेंट ऑलरेडी ही बन चुकी है कि ये ऐसा ही होगा, राइट। सो द लेंथ ऑफ स्प्रिंग will change depending on the magnitude of disturbance. So we have attached a small mass at one end and the other end of the spring was fixed. So what you would observe, or what to observe, this is the wall. अब ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जैसे ही इधर से कुछ डिस्टर्बेंस, आपने कैसे डिस्टर्बेंस करनी है, ऑब्वियसली या तो स्प्रिंग को आगे की तरफ इस मास को पकड़ के खींचेंगे, करेक्ट, यू आइदर गोना पुल दिस मास or either you're going to push this mass inward, correct? So you either are going to pull or push it. Any kind of disturbance you do, disturbance is make the disturbance, and what it is actually either pull or push it. You will observe that the spring has extended, correct, because you have pulled it. Spring is an elastic object, so it will get extended, and maybe the new position of the mass should be a little bit like somewhere it can be here. This m, I'm saying it's a mass, small block of mass m is attached, right, any small mass. So what has happened, ये जो लेंथ थी जब आपने इसको पुल नहीं किया था, जब ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर था, इसको हम कहेंगे, जो लेंथ इसकी रेस्ट पोजीशन पर थी वो ओरिजिनल लेंथ थी। क्या थी, ओरिजिनल लेंथ। ऑब्वियसली ये इतनी उसकी ओरिजिनल थी ना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो ऑब्जर्वेशन किया हमने। और जब इसको पुल किया सेकंड केस में,
इस तरफ हमने पुल किया, तो ये जो लेंथ है ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक्सटेंडेड लेंथ है. दिस इज एन एक्सटेंडेड लेंथ. तो ऑब्जर्वेशन नाउ, ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पुल है वो आपके पास क्या है, बिकॉज द पुल एंड पुश इज द फोर्स, सो बाय द डेफिनेशन इट वाज द फोर्स दैट यू exerted, correct? So means this was the original length which was equal to L. When it was at rest position there was no disturbance. When we pulled it, this is the direction of pulling. So say when we have pulled it, some kind of disturbance we did make, then the length of the spring changed or increased. This can be increased or extended length, correct? What actually we have observed, what we would observe, that this is an increased or extended length. So you will observe how much is the change in length. In length, in the short form or in just one word, we can write this change in length, which is equal to extension, and we write extension by the formula either x or either e. So I'm writing for now x, but it can be e as well. This was L naught and this was L1. Extension is from here to here. Our extension will be equal to L minus L0 or LO. Is the most important thing which is in the Hooke's law, that this force exerted F is directly proportional to the extension x created or produced in the spring. Whenever you change proportionality into equality, you have to put some constant k or c. That constant in this case, k in this case, will be spring constant. Spring constant means कि ये स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करा सकता है. ये के जो है वो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है. अगर के की वैल्यू स्मॉल होगी तो स्मॉल सी फोर्स बहुत ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस करा सकती है. अगर के की वैल्यू लार्ज होगी तो बहुत ज्यादा फोर्स से भी पुल करें ना, कुछ स्प्रिंग्स बहुत हार्ड होते हैं, वेरी स्टिफ, क्योंकि उनकी के की वैल्यू बहुत हाई होती है. तो अगर हम लार्ज फोर्स से भी उसको पुल करें तब भी थोड़ी सी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी. ऑल्दो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट द थिंग इज लाइक कि आपके पास हो सकता है इधर 100 न्यूटन की फोर्स हर दफ़ा, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, हर दफ़ा 100 न्यूटन की फोर्स हो सकता है 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करा रही हो अगर के की वैल्यू हाई है. और अगर के की वैल्यू स्मॉल है, इट्स वेरी लेस, सो हो सकता है 1 न्यूटन की फोर्स ही हर दफ़ा 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस करा रही हो, या इवन 2 न्यूटन या 5 न्यूटन की फोर्स. ठीक है, तो इट डिपेंड्स. डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है हर दफा जितनी फोर्स इक्वली इंक्रीज करेगी उतना ही एक्स इक्वली इंक्रीज करेगा. इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स बहुत ज्यादा हुई तो एक्स में इंक्रीज कम क्यों हुआ. इसका मतलब नेक्स्ट टाइम भी जितनी फोर्स बहुत ज्यादा थी उतनी ही वैल्यू नेक्स्ट टाइम भी हम लगाएंगे, तो वही वैल्यू एक्स में भी इंक्रीज होगी जो फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुई थी. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटीज मीन इफ वन क्वांटिटी चेंजेस, the other quantity changes equally with the first one. So what do we mean by direct proportionality? That force is directly proportional to extension x. It means time. So let's draw the table for confirming that these are directly proportional. Okay, now let's see. हम क्या करते हैं, हर 2 न्यूटन के लिए चेक करते हैं. ठीक है, ये 2 न्यूटन पे कितना आया, 0.10. Okay, when the force was 2, the extension was 0.01, 0.02. जब फोर्स 2 से 4 हुई. Did you get the concept that these are directly proportional? This is the law because it's a Hooke's law. That's why we are saying it. It's a law. Law means it should be followed for the objects which are extendable, and till the limit these quantities are proportional, till that limits of the force the law holds. I'm gonna find x when F equals 16 Newton. Can you find it?